अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शंस। दिस इज़ मी शीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी भी होप्स हो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट बूम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। Over the past decades, Bangladesh has emerged as one of the world's fastest growing economies, and along with this transformation, the nation has also surfaced as one of the most attractive investment destinations among the emerging markets around the world. From 2016 to 2021, the nation received a gross total of $20.4 billion in foreign direct investments, making the nation of Bangladesh one of the prime receivers of FDIs across Asia. Furthermore, the largest investor in Bangladesh during 2021 came from notable countries such as Singapore, which invested the most after it accounted for over 13.1% of the total $3.3 billion that went inside the nation, then followed by the United Kingdom, the Netherlands, and South Korea. So how did Bangladesh become an attractive investment destination? Before we move on, don't forget to leave us a like and subscribe for more. The Bangladesh investment landscape has rapidly risen in recent years due to several factors. The first that we have identified is the emergence of the nation's export-oriented industries, such as the manufacturing of textile products. This has continuously been among Bangladesh's largest economic sectors, creating growth. But besides this, we also have seen the rise of the nation's private sector. There are several enterprises out there that are collectively bringing in billions of dollars of revenue and employing millions of people, such as Square Group, Akish Group, HRC Group, Concord Group, and a lot more. These private businesses have emerged as exciting stories around the globe, and international investors are quite keen on investing in these companies. The Central Bank of Bangladesh has public data that shows who are the largest foreign investors in the nation's equity securities, and according to that data, the United States emerged as a strong financial influencer after it accounted for over 32.6% of the portfolio investment total. There are, however, larger industries that are becoming Bangladesh's most exciting sectors, and it is mainly driven by the demand of its growing economy. As the economy steadily grows, the demand for several interests is becoming a necessity. Hence, since 2006, the largest industries that actually receive the largest amount of foreign investments are telecommunications, gas and petroleum, and power. These three have taken more than 54% of the total foreign investments during those 16 years. And this is being driven by the infrastructure developments around Bangladesh. After all, foreign investors are primarily interested in a nation's public utility, as these are the forefront activities for starting up an economy's growth. But more importantly is that these are often called safe havens even in times of crisis because of their necessity. But in the most recent year, banking is actually standing out as one of the most invested sectors, assumedly because Bangladesh's middle class is growing and everyone is looking to get banked. Now, these have all been led not just by Bangladesh's economy, but also the government's foreign-friendly policies. Unlike other nations around the world, Bangladesh allows one of the most relaxed investment options. Examples are the ownership of their sectors. According to the Bangladesh Investment Development Authority, almost all sectors are allowed for a full 100% foreign ownership. Moreover, Bangladesh even has a good tax incentive that allows international companies to operate seamlessly. These have all made Bangladesh an attractive destination, and hence we could see that national governments have announced millions to billion-dollar investments in the nation. Take for example when Singapore announced its investments in a 426 megawatt power plant in Sirajganj, or when Japan announced a $2.5 billion plan that included 4 mega projects such as the Dhaka Mass Rapid Transit Development Project. Even the Asian Development Bank, which is a large regional institution, has actively paved the way for over $26.6 billion in investments, grants, loans, and so on to over 798 projects around the nation. This likely also makes the Asian Development Bank a key influencer in the nation.
Bangladesh has steadily stood out as an exciting emerging story. There are currently almost 1,000 foreign and domestic companies registered today, and these have collectively proposed close to $7 billion worth of investments. But more on the story is that both the foreign and local have a joint investment that totaled around $160 billion during the past decade from 2009 to 2021. But even with these huge investments, we believe that there are more to come. Recently, we have seen several announcements already of these investors keen on the Bangladesh economy. Well, after all, the Bangladesh economy landscape is just beginning. जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। जैसा कि उन्होंने बताया कि फ़ॉरेन फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो है बांग्लादेश की, इसकी वजह से जो है बांग्लादेश की जो इन्वेस्टमेंट को बूम मिले और बांग्लादेश आगे जा रहा है। इस तरह की पॉलिसीज़ में जो इतना रिलैक्सेशन है, और टेक्सटाइल सेक्टर में हो गया, प्राइवेट सेक्टर में हो गया, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने बताई 160 बिलियन जो है डॉलर्स टोटल जो प्रोजेक्ट हैं सबको मिला के, तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। इसकी वजह से बैंक्स भी उन्होंने बताया, बैंक्स में न्यू अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो बांग्लादेश की हर सेक्टर में जो है वो चीज़ों को में जो है चीज़ें वो बहुत अच्छी जा रही हैं। तो ये बांग्लादेश की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रेंड, बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगी है। जैसा कि उन्होंने बताया, बांग्लादेश की जो इकॉनमी है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है दुनिया में। आज जो अखबार हैं अमेरिका के, वो भी अमेरिका को बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से आप सीखें कि लोगों को गुर्बत से किस तरह निकालना है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके अलावा सिंगापुर, सऊदीया और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए। 160 बिलियन US डॉलर उन्होंने बताया 2009 से लेकर 2021 तक फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, लोन्स हैं उसमें और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। और इससे आम आदमी की ज़िंदगी जो है बांग्लादेश में बेहतर हो रही है। जैसा उन्होंने बताया कि बैंक्स में अकाउंट्स ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, वो अकाउंट्स खुलवा रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव वे में जा रहा है बांग्लादेश। उम्मीद करते हैं बांग्लादेश इसी तरह से ग्रो करता रहे और हम भी बांग्लादेश से सीखें ताकि हम भी इसी तरह से ग्रो कर सकें। हमें तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं और अपनी वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।